Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Pansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 25th chapter of class 4th. This chapter name is paragraph writing. In this chapter, we will study about how we write a paragraph. A paragraph consists of several sentences that are grouped together. एक पैराग्राफ में बहुत सारे sentences होते हैं जो एक साथ grouped होते हैं, एक साथ लिखे जाते हैं. This group of sentence together discusses one main subject. ये सारे जो group of sentence होते हैं ये एक ही main subject के बारे में discuss कर रहे होते हैं. A paragraph has mainly 3 parts in it. एक paragraph के mainly 3 parts होते हैं. कौन से होते हैं? These are introductory sentences, supporting sentences, concluding sentences. Read the given paragraph carefully. यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिए हैं, उनको हमें केयरफुली रीड करना है. पहला पैराग्राफ है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन civilization. Education provides the nation with manpower, promotes national unity and uplift public awareness. A country needs different kind of manpower such as doctors, engineers, teachers and other technical hands. Education provides the nation with those educated mind. If people are educated, they can understand their duties and rights. It make all people conscious. Educated people can reform the society. They can understand what is wrong and what is right. They can save good traditions. Education enhance human prosperity. तो ये एक पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. सबको एजुकेट होना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए अच्छी चीजें कर सकते हैं. अपनी ड्यूटीज और राइट्स का हमें पता होगा और हमें सब चीज पता होगी कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है. माई नॉटी ब्रदर, ये एक पैराग्राफ है मेरे नॉटी भाई, मेरा शरारती भाई के बारे में. राहुल इज माई नॉटी ब्रदर. ही नेवर सिट स्टिल. He always think of new ways of mischief. He bother one and all. Everyone is fed up with his pranks. He is punished quite often. He is instructed again and again that he should leave his naughty ways, but he is beyond correction. He assured never to repeat the mischief. He pronounces not to repeat but time and again he forget his promises. He pay very little attention towards his studies. He spend most of his time playing with his friends. He loves going to school. He does so because he wants to spend some quality time with his friend. His teachers complain about his, yet he is never bothered about their complaint. He is very mischievous. Despite all this, he is very loving and innocent. तो ये है एक उसका भाई है, एक नॉटी ब्रदर है, उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखा है. नेक्स्ट इज सनसेट. Sunset is that time of the day when our sky meet the outer space solar winds. There are blue, pink and purple swirl, spinning and twisting like clouds of balloons caught in a blender. The sun moves slowly to hide behind the line of the horizon while the moon races to take its place in prominence atop the night sky. Life became slow. There is a coolness, a calmness when the sun set. The next is our school library. Our school library is our storehouse of books. It has a variety of books. There are books on all subjects in our library. Student can get any book issued in their names. Each student has a library card. There are many journal, magazine and daily newspaper also. There are books on music, sports, magic, etc. Books are arranged in shelves and cupboards in our library. Our library has a reading room too. Many students sit there and study. I also like studying in my library because it is very peaceful.
ये एक पैराग्राफ है स्कूल लाइब्रेरी के बारे में, तो यहाँ पर उसने सब बताया है। अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग एक पैराग्राफ है। विंटर इज द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, विंटर सबसे कोल्डेस्ट सीजन होता है ईयर का। विंटर मॉर्निंग इज डार्क एंड कोल्ड, एक विंटर की मॉर्निंग डार्क होती है और कोल्ड होती है। देयर इज नो साउंड ऑफ क्रिपिंग बर्ड्स, यहाँ पर सुबह सुबह चिड़ियाओं के चहचहाने की भी आवाज नहीं होती है। एवरी ऑब्जेक्ट इज कवर्ड विद ड्यू, ड्यू टू डार्कनेस नथिंग इज विजिबल, द फॉग मेक्स द सराउंडिंग इनविजिबल, द पीपल प्रेफर टू गेट अप लेट, लोग प्रेफर करते हैं लेट उठने का। दे डू नॉट फील लाइक मूविंग आउट ऑफ देयर वार्म एंड कोजी बेड, वो अच्छा फील नहीं करते हैं कि उनको अपने वार्म और कोजी बेड से बाहर निकलना पड़े। द सनराइज ऑफ अ विंटर मॉर्निंग इज वेरी ब्यूटीफुल, जो सनराइज होता है विंटर मॉर्निंग का वो बहुत सुंदर होता है। विंटर इज माई फेवरेट सीजन, विंटर मेरा फेवरेट सीजन है। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। इट इज वेरी रिफ्रेशिंग टू स्टार्ट अ डे विद अ विंटर मॉर्निंग वॉक, ये एक बहुत रिफ्रेशिंग होता है कि अपना डे स्टार्ट करना मॉर्निंग वॉक से। नेक्स्ट इज गांधी जयंती। Our third important national festival is Gandhi Jayanti. It is celebrated on 2nd October every year. Mahatma Gandhi, the father of our nation, was born on 2nd October 1869. His birthday is celebrated as a national festival all over the country. He led our nation in the fight for the freedom. Truth and non-violence were his only tool in this fight against the British. His way of fighting was सत्याग्रह, he taught us to be honest and truthful. तो ये एक पैराग्राफ लिखा गांधी जयंती के बारे में। Now come to the next page. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ये एक पैराग्राफ है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। द ग्रोथ ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज बीन अ मेजर force of India's cultural unity. Most of the word and themes of the Indian classical music have been derived from Hindu mythology, but some of the greatest master of this music have been Muslims. The Kitabi-e-Norus, a collection of song, is in praise of Hindus that deities and Muslim sant, was written by a 17th century ruler Ibrahim Adil Shah II. Both in vocal and instrumental music, two main classical styles have involved, Hindustani and Carnatic. These two styles have many things in common, and each has a variety of forms. Besides classical music, Indian people have developed a rich tradition in folk music. Now the next is childhood. The best year of one's life are the childhood days. The sweet memories of this period are glorious. They have the freshness of a dream. A child has no responsibilities. He is looked after by his parents. He gets everything without doing anything. A child enjoys perfect freedom. He has no worry, no hardships, and no troubles. He can say anything to anybody. He often quarrels with others over small things but soon forget about it. Childhood is really the golden period of one's life. Now the next is write short paragraph on each of the following topic. आपको इन topics पर short note लिखने हैं, short paragraph लिखने हैं. You can use a hint from the box. आपको कुछ hint दिए गए हैं box में, उनको आप use कर सकते हैं. First topic है my school. What is the name of your school? Where is it situated? How is your school building? How are your teachers and other staff of the school? आप इन topics को use करके एक my school पर क्या लिख सकते हैं? पैराग्राफ लिख सकते हैं. Second है friendship. What is friendship? Who are your friends? How do you spend time with your friends? What can you do for your friendship? ये हिंट को यूज करके आप यहाँ पर फ्रेंडशिप पर पैराग्राफ लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में. गेम्स है नेक्स्ट. व्हाट आर गेम्स? टाइप ऑफ गेम्स. योर फेवरेट गेम. हाउ गेम्स हेल्प अस. व्हाट गेम्स टीच अस. ये कुछ हिंट यूज कर सकते हैं आप. मदर्स डे है नेक्स्ट. व्हेन इज द मदर्स डे सेलिब्रेटेड? हाउ डिड यू सेलिब्रेटेड मदर्स डे दिस ईयर? What did you do for your mothers to make her feel special? How did your mother react? इन सब हिंट को यूज करके आप मदर्स डे पर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में. थैंक यू स्टूडेंट्स.